Nagaland Legislative Assembly Secretariat has confirmed the acceptance of a notice under Rule 54 concerning the urgent public matter titled Prohibition of Satanic Worship in Nagaland. Nagaland made a strong showing at the 4th Sub-Junior National Taekwondo Championship held in Cuttack, Odisha. Parent District Football Association has announced the launch of the Women's Cup 2025, marking a historic milestone as the first ever running trophy tournament exclusively for women in the district. Mokokchung Times strongly condemned the recent attack on Hornbill TV reporter Deep Saikia, calling it only a crime against an individual but also an attack on press freedom and democratic values. First Kezama Village Millet Festival was held in Zaki Ground on Kozuma, Kohima district. It was organized by the Kezuma Village Council with help from the Agriculture and Tourism Department of Nagaland. Hello and welcome to Nltv English Primetime. This is Yanchan Kasar and now the news in detail. The first Kezama Village Millet Festival was held on August 30 at Zaki Ground on Kozuma, Kohima district. It was organized by the Kezuma Village Council with help from the Agriculture and Tourism Department of Nagaland. Vikehuspu, special guest and managing director of Okusa Toyota, spoke about how millet is a strong crop that can handle climate changes. The festival included folk music, speeches by village leaders, and showed the farming traditions of Kezuma. They even wants to encourage millet farming, teach people about its health benefits, and inspire youth people to keep traditional farming alive. The Nagaland Senior Retired Doctor Association, led by Dr. Nefi Kiri and Dr. Y. Vikato Kinemi, visited the Nagaland Institute of Medical Sciences and Research on Saturday, applauding its rapid academic and infrastructural growth. They highlighted the enrollment of 300 MBBS students and advanced facilities like the skill lab, 3D dissection lab, and digital classroom. The delegation urged swift completion of hostels, playground, guest house, and a proposed 500-bed hospital, as well as early start of the clinical service. They also called for expedite implementations of the Zika project to develop NIMSR into a multidisciplinary tertiary care center, praising the institute leadership and potential as Nagaland's premier healthcare hub. Mokokchung hosted the Junior Athletic Meet 2025 at Imkong Marine Sports Complex with 63 youth athletes competing in under 14, under 16 and under 18 categories. Organized by the Mokokchung Athletic Association under Nagaland Athletes Association, the event featured Tiarlong and track field events. Moa Along Jamir from NAA observed the meet, while district sport officials encouraged youth to pursue sport as a career. Medal winner will represent Mokokchung at the 2nd Nagaland Junior Athletic Championship in September. MAA President Rongsen Toshi Jamir urged athletes to stay committed and make their families proud. Discussions were held to strengthen the association's future. Nagaland Lok Sabha MP and NPCC President S. Supungmaran Jamir launched the Say No to Drugs campaign in Kohima on Saturday, led by the Jawahar Bal Manch, aimed at raising awareness among youth through art and speech competition. Jamir said the initiative reflects Rahul Gandhi's vision of a drug-free society. NPCC leaders stressed the urgency of fighting drug abuse in the Northeast and called for collective, consistent effort to safeguard the youth. Mokokchung Times strongly condemned the recent attack on Hornbill TV reporter Deep Saikia, calling it not only a crime against an individual but also an attack on press freedom and democratic values. The incident underscores the increasing dangers journalists face in this line of duty. The publication expressed solidarity with Deep Saikia and his family, wishing him a speedy recovery, and urges authorities to conduct a true and impartial investigation to ensure justice. Mokokchung Times emphasized that violence against journalists undermines democracy and calls on the state, civil society and citizens to unite in protecting press freedom. A 6-day awareness and attachment program was successfully conducted by PEG Police and PGC, where students were trained on various aspects of law enforcement,
legal procedures and community safety. Classes were taken by police officers and home guard covering topics such as Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, Bharatiya Shiksha Adhiniyam, Riot Control Investigation Technique, Traffic Management, First Aid, Cybercrime Awareness, Weapon Handling, Physical Training and Anti-Drug Campaign. A batch of 18 students completed the full attachment with paid police while 27 students attended a special class session. Nagaland made a strong showing at the 4th Sub-Junior National Taekwondo Championship held in Cuttack, Odisha. From August 28 to 30, the Nagaland Taekwondo Association athletes secured 2 gold medals and 1 silver in the Sub-Junior Boys Division. Sitsutong won the gold in the under 35 kg category, defeating competitors from Maharashtra, Haryana, Telangana and Bihar. Sudan Lamliu took gold in the under 29 kg category with victories over Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Puducherry and Uttarakhand. The NTA thanked Director of Youth Resources and Sports and NTA President for their support. The Parent District Football Association has announced the launch of the Women's Cup 2025, marking a historic milestone as the first ever running trophy tournament exclusively for women in the district. Describing the event as more than just a competition, PDFA called it a movement to empower women in the football by creating equal opportunities to compete, excel and inspire. The inaugural Women's Cup will take place from September 4 and 8 at the Turf Ground, Jolaki Town under the theme Her Game, Her Glory. The championship will be awarded with 20,000 along with medals, certificates and a trophy, while the runners-up will be receiving Rs 10,000 plus medal, certificate and a trophy. The last date for registration is August 31. Interested participants are encouraged to register soon to be part of this landmark tournament. The Nagaland Legislative Assembly Secretariat has confirmed the acceptance of a notice under Rule 54 concerning the urgent public matter titled Prohibition of Satanic Worship in Nagaland. The issue will be discussed in the Assembly after the question hour on Tuesday, that is 2nd of September. Following the Speaker's approval, the move comes amid growing concern over such practices in the state, with the government accepted to deliberate on measures to address the issue. Imagi Mira, a leading women's organization in Manipur, publicly burned the 692-page PUCL report on the state crisis, accusing of a bias and inflating tensions. Governor Tokchom Sujata said the report unfairly focused on the ethnic group, risking further division. The group condemned the report as one-sided and unacceptable and urged authorities to prevent such publications from worsening communal conflict. The protest highlights local frustration with outside narrative and stressed the need for balanced conflict reporting. A major fire broke out last Saturday at Dudnoy Girls Higher Secondary School in Golpara, destroying classroom, the principal's office, storeroom and kitchen. The blaze claimed the life of kitchen assistant Vivek Ananda Rabha. The fire, possibly triggered by gas cylinder explosion or electric fault, rapidly engulfed the campus. Police are investigating the cause, and Education Minister Ranoj Pegu, who visited the site, assured prompt rebuilding of the damaged facilities and extended condolences to the victim's family. Compensation and restoration will be managed by the Disaster Management Department. Police from Radhakishorpur Police Station in Gomati district conducted a raid at Hotel Imperial on Jail Road after receiving a secret tip-off. They arrested 7 youths who booked room number 107 pretending to hold a meeting but were actually gambling. During the raid, the police recovered 1,24,450 in cash along with various gambling materials from the group. The arrested youth are from Taibu village in Gomati district. Sub-Divisional Police Officer Nirmal Das said the police acted quickly based on the secret information. The names and address of the arrested have not been shared publicly.
আজকে সন্ধ্যে 6:30 নাগাদ আমাদের কাছে একটি গোপন সূত্রে খবর আসে হোটেল ইম্পেরিয়াল, যেটি উদয়পুর জেল রোডে অবস্থিত, সেখানে এই হোটেলে 107 নম্বর রুমে কিছু যুবক গ্যামলিং করছিল, জুয়া খেলছিল। তৎক্ষণাৎ আমাদের আরটিপুর পিএসের অফিসার এবং স্টাফ ওখানে রাশ করে এবং ওই রুম থেকে 7জন যুবককে আমরা ডিটেইন করেছি। তো তখন আমরা গিয়ে দেখেছি ওরা গ্যামলিং করছিল, জুয়া খেলছিল উইথ কার্ডস, 3 তাস যেটাকে বলে, এবং তাদের কাছে টোটাল 1,24,450 টাকা সিজ করা হয়েছে। কজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে? 7জন। যে অভিযুক্ত 7জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তারা কি লোকাল উদয়পুরের নাকি অন্য জায়গায়? এখনো যত খবর পেয়েছি ওরা বাইরে থেকে গেছিল, মিটিং বলে রুম হায়ার করেছিল, রুম রেন্ট করেছিল, কিছু একটা গ্রুপ মিটিং বলে। তো ওদেরকে হোটেল ওনার রুম একটা দিয়েছিল 107 নম্বর রুম, তো সেই রুমে ওরা গ্যামলিং করছিল। তাদের বাড়ি বুঝেছে? বাড়ি আমরা এখন দেখছি। নামগুলো বলা যাবে? নামগুলো এখন আমরা রিভিল করছি না। আদালতে কি প্রেরণ করলো? প্রসিকিউশন রিপোর্ট সাবমিট করবে। টোটাল কত টাকা পাওয়া গেছে আরেকবার যদি বলেন? টোটাল 1,24,450, 1,24,450 টাকা। আজকে সন্ধ্যে 6:30 নাগাদ আমাদের কাছে একটি গোপন সূত্রে খবর আসে হোটেল ইম্পেরিয়াল, যেটি উদয়পুর জেল রোডে অবস্থিত, সেখানে এই হোটেলে 107 নম্বর রুমে কিছু যুবক গ্যামলিং করছিল, জুয়া খেলছিল। তৎক্ষণাৎ আমাদের আরটিপুর পিএসের অফিসার এবং স্টাফ ওখানে রাশ করে এবং ওই রুম থেকে 7জন যুবককে আমরা ডিটেইন করেছি। তো তখন আমরা গিয়ে দেখেছি ওরা গ্যামলিং করছিল, জুয়া খেলছিল উইথ কার্ডস, 3 তাস যেটাকে বলে, এবং তাদের কাছে টোটাল 1,24,450 টাকা সিজ করা হয়েছে। কজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে? 7জন। যে অভিযুক্ত 7জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তারা কি লোকাল উদয়পুরের নাকি অন্য জায়গায়? এখনো যত খবর পেয়েছি ওরা বাইরে থেকে গেছিল, মিটিং বলে রুম হায়ার করেছিল, রুম রেন্ট করেছিল, কিছু একটা গ্রুপ মিটিং বলে। তো ওদেরকে হোটেল ওনার রুম একটা দিয়েছিল। On August 30, the Live Village Authority clarified an incident during the Zini festival involving Hornbill TV reporter Deep Saikia, who was accidentally shot by an air gun. The person responsible, Reveni Ramai, is not from Lai but from Puba Kuman and was visiting as a tourist. He admitted to firing the air gun to shoot a bird and said he didn't see the victim nearby. Live Village stated that hunting and carrying air gun is banned in their area. They strongly denied any involvement by villagers and condemned false media report blaming the community. The village stands with the victim, prays for his recovery and promised full support to ensure justice. They also apologized to visitors and promised a safe, peaceful environment. BJP President JP Nadda visited a Ganesh Pandal in Monday on Sunday and prayed for the nation's progress under PM Modi's leadership. He said Lord Ganesh remove obstacles and bring wisdom. Nadda also remembered Lokmanya Tilak for standing public Ganesh celebration in 1983, which played a role in India's freedom movement. He was joined by Maharashtra BJP leaders and later visited the famous Lal Bukchar Raja with CM Devendra Fadnavis and Minister Ashish Shiller. Earlier, UP Deputy CM Keshav Prasad visited CM Fadnavis at his official residence in Mumbai. गणेश उत्सव पर मुझे मुंबई आने का सौभाग्य मिला है। आज मन की बात सुनने का भी हमको सौभाग्य मिला है। गणेश भगवान हम जानते हैं कि हमें बुद्धि देते हैं और विघ्न को हरते हैं। ऐसे विघ्नहरी गणेश जी महोत्सव में मुंबई आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है और आज मुझे यहाँ दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। हम जानते हैं कि गणेश जी हमें नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा, नई उमंग, नई ताकत देते हैं और उस उमंग ताकत के साथ साथ हमने मनोकामना की है कि जिस तरीके से बाल गंगाधर तिलक जी ने
गणेश जी को घर से सार्वजनिक स्थान पर पूजन के लिए प्रेरित किया और यह सार्वजनिक उत्सव के रूप में मनाने का तय किया, यह आजादी की लड़ाई से बहुत प्रेरणा देने वाला और जुड़ने वाला आंदोलन के रूप में स्थापित हुआ। ये हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था 1893 में, 1893 में। 133 वर्ष हो गए। आज मैंने मनोकामना की है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हम आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी से युक्त भारत, समर्थवान भारत, सुरक्षित भारत, समृद्ध भारत, विकसित भारत, इस ओर हम बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें गणेश जी का जो विघ्नहरी है वो विघ्न को दूर करें और पूरी ताकत हम सबको दें ताकि हम इस काम को 140 करोड़ का देश मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत को अर्जित कर सकें। We will now take a short break. Stay tuned, we'll be right back. Welcome back, viewers. Let's get back with the news. A powerful blast occurred on Sunday around noon at a firecracker factory inside a house in the Gudamba area of Lucknow, killing at least 2 people and injuring 5 others. The explosion caused part of the roof to collapse, trapping 5 people under the debris. All 5 were rescued and taken to hospital. District Magistrate Vishak G said 2 of the injured are in critical condition, while the other 3 are stable. The blast was so strong that it damaged at least 4 nearby houses. The authorities are now focusing on providing medical care to the injured and investigating the cause of the explosion. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath expressed condolence to the families of the deceased and directed individuals to immediately rush to the site to speed up rescue and relief work. दो लोगों की डेथ कंफर्म्ड है और उसके साथ साथ कुल 5 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 3 लोगों के प्राथमिक उपचार के बाद वो ठीक हैं और 2 लोग थोड़ा गंभीर रूप से उनकी चोट लगी हुई है, तो वो KGMC रेफर हुए हैं। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको पूरी तरीके से कर लिया गया है। जो मकान थे वो उनसे 2 लोग जिनका है आलम और उनकी वाइफ, उसकी डेथ हो गई है। तो और जो उनके बच्चे हैं और आसपास के लड़के हैं, तो कुल 5 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 3 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद रिलीव कर दिया गया है और 2 लोग जो है अभी KGMC में हैं। 2 लोगों की डेथ कंफर्म्ड है और उसके साथ साथ कुल 5 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 3 लोगों के प्राथमिक उपचार के बाद वो ठीक हैं और 2 लोग थोड़ा गंभीर रूप से उनकी चोट लगी हुई है, तो वो KGMC रेफर हुए हैं। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको पूरी तरीके से कर लिया गया है। जो मकान थे वो उनसे 2 लोग जिनका है आलम और उनकी वाइफ, उसकी डेथ हो गई है। तो और जो उनके बच्चे हैं और आसपास के लड़के हैं, तो कुल 5 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 3 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद रिलीव कर दिया गया है और 2 लोग जो है अभी KGMC में हैं। 2 लोगों की डेथ कंफर्म्ड है और उसके साथ साथ कुल 5 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 3 लोगों के प्राथमिक उपचार के बाद वो ठीक हैं और 2 लोग थोड़ा गंभीर रूप से उनकी चोट लगी हुई है, तो वो KGMC रेफर हुए हैं। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको पूरी तरीके से कर लिया गया है। जो मकान थे वो उनसे 2 लोग जिनका है आलम और उनकी वाइफ, उसकी डेथ हो गई है। तो और जो उनके बच्चे हैं और आसपास के लड़के हैं, तो कुल 5 लोग घायल हुए थे,
जिनमें से 3 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद रिलीव कर दिया गया है और 2 लोग जो है अभी केजीएमसी में हैं। 2 लोगों की डेथ कंफर्म्ड है और उसके साथ साथ कुल 5 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 3 लोगों के प्राथमिक उपचार के बाद वो ठीक हैं और 2 लोग थोड़ा गंभीर रूप से उनकी चोट लगी हुई है, तो वो केजीएमसी रेफर हुए हैं। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको पूरी तरीके से कर लिया गया है। जो मकान थे वो उनसे 2 लोग जिनका है आलम और उनकी वाइफ, उसकी डेथ हो गई है। तो और जो उनके बच्चे हैं और आसपास के लड़के हैं, तो कुल 5 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 3 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद रिलीव कर दिया गया है और 2 लोग जो है अभी केजीएमसी में हैं। 2 लोगों की डेथ कंफर्म्ड है और उसके साथ साथ कुल 5 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 3 लोगों के प्राथमिक उपचार के बाद वो ठीक हैं और 2 लोग थोड़ा गंभीर रूप से उनकी चोट लगी हुई है, तो वो केजीएमसी रेफर हुए हैं। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको पूरी तरीके से कर लिया गया है। जो मकान थे वो उनसे 2 लोग जिनका है आलम और उनकी वाइफ, उसकी डेथ हो गई है। तो और जो उनके बच्चे हैं और आसपास के लड़के हैं, तो कुल 5 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 3 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद रिलीव कर दिया गया है और 2 लोग जो है अभी केजीएमसी में हैं। 2 लोगों की डेथ कंफर्म्ड है और उसके साथ साथ कुल 5 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 3 लोगों के प्राथमिक उपचार के बाद वो ठीक हैं और 2 लोग थोड़ा गंभीर रूप से उनकी चोट लगी हुई है, तो वो केजीएमसी रेफर हुए हैं। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको पूरी तरीके से कर लिया गया है। जो मकान थे वो उनसे 2 लोग जिनका है आलम और उनकी वाइफ, उसकी डेथ हो गई है। तो और जो उनके बच्चे हैं और आसपास के लड़के हैं, तो कुल 5 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 3 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद रिलीव कर दिया गया है और 2 लोग जो है अभी केजीएमसी में हैं। 2 लोगों की डेथ कंफर्म्ड है और उसके साथ साथ कुल 5 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 3 लोगों के प्राथमिक उपचार के बाद वो ठीक हैं और 2 लोग थोड़ा गंभीर रूप से उनकी चोट लगी हुई है, तो वो केजीएमसी रेफर हुए हैं। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको पूरी तरीके से कर लिया गया है। जो मकान थे वो उनसे 2 लोग जिनका है आलम और उनकी वाइफ, उसकी डेथ हो गई है। तो और जो उनके बच्चे हैं और आसपास के लड़के हैं, तो कुल 5 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 3 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद रिलीव कर दिया गया है और 2 लोग जो है अभी केजीएमसी में हैं। 2 लोगों की डेथ कंफर्म्ड है और उसके साथ साथ कुल 5 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 3 लोगों के प्राथमिक उपचार के बाद वो ठीक हैं और 2 लोग थोड़ा गंभीर रूप से उनकी चोट लगी हुई है, तो वो केजीएमसी रेफर हुए हैं। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको पूरी तरीके से कर लिया गया है। जो मकान थे वो उनसे 2 लोग जिनका है आलम और उनकी वाइफ, उसकी डेथ हो गई है। तो और जो उनके बच्चे हैं और आसपास के लड़के हैं, तो कुल 5 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 3 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद रिलीव कर दिया गया है और 2 लोग जो है अभी केजीएमसी में हैं। 2 लोगों की डेथ कंफर्म्ड है और उसके साथ साथ कुल 5 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 3 लोगों के प्राथमिक उपचार के बाद वो ठीक हैं और 2 लोग थोड़ा गंभीर रूप से उनकी चोट लगी हुई है, तो वो केजीएमसी रेफर हुए हैं। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको पूरी तरीके से कर लिया गया है। जो मकान थे वो उनसे 2 लोग जिनका है आलम और उनकी वाइफ, उसकी डेथ हो गई है। तो और जो उनके बच्चे हैं और आसपास के लड़के हैं, तो कुल 5 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 3 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद रिलीव कर दिया गया है और 2 लोग जो है अभी केजीएमसी में हैं। 2 लोगों की डेथ कंफर्म्ड है और उसके साथ साथ कुल 5 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 3 लोगों के प्राथमिक उपचार के बाद वो ठीक हैं और 2 लोग थोड़ा गंभीर रूप से उनकी चोट लगी हुई है, तो वो केजीएमसी रेफर हुए हैं। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको पूरी तरीके से कर लिया गया है। जो मकान थे वो उनसे 2 लोग जिनका है आलम और उनकी वाइफ, उसकी डेथ हो गई है। तो और जो उनके बच्चे हैं और आसपास के लड़के हैं, तो कुल 5 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 3 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद रिलीव कर दिया गया है और 2 लोग जो है अभी केजीएमसी में हैं। 2 लोगों की डेथ कंफर्म्ड है और उसके साथ साथ कुल 5 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 3 लोगों के प्राथमिक उपचार के बाद वो ठीक हैं और 2 लोग थोड़ा गंभीर रूप से उनकी चोट लगी हुई है, तो वो केजीएमसी रेफर हुए हैं। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको पूरी तरीके से कर लिया गया है। जो मकान थे वो उनसे
दो लोग जिनका है आलम और उनकी वाइफ, उसकी डेथ हो गई है। तो और जो उनके बच्चे हैं और आसपास के लड़के हैं, तो कुल 5 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 3 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद रिलीव कर दिया गया है और 2 लोग जो है अभी KGMC में हैं। Welcome back, viewers. Let's get back with the news. Punjab police recently made several important arrests in different cases. In Jalandhar, they caught Manjit Singh with 2.5 kilograms of heroin and rupees 2 lakh in drug money. A case has been registered and the police are investigating to dismantle the entire drug network. On August 26, the Pathankot police stopped a planned killing by arresting 4 people, including 2 juveniles and 6 pistols and ammunition.
These criminals were linked to foreign-based gang members in Barnala. Police arrested 4 associations of the Devendra Bambiaha gang while they were planning a robbery. Although the accused fired at the police, they were caught along with the vehicles. Punjab police continues their effort to fight drug trafficking and organized crime in the state. Punjab's anti-gangster task force along with Tarn Taran police arrested 2 men involved in a recent shooting at the saloon in Patti, Tarn Taran. The accused were linked to the gang of foreign-based gangster Prabhat Basuwal. They carried out the firing on his order as part of an extortion plan and were involved in planning other major crimes in Punjab. Police recovered 3 homemade 30-bore pistols from them. The investigation is ongoing to cover the entire criminal network. On Friday night, a cloudburst hit Rajgarh Gadigarh in Ramban district, killing at least 5 people. 4 bodies were found and rescuers are still looking for 1 more. The victims include 3 family members and a guest. The cloudburst caused a flash flood that destroyed a house, a school and other property. Local people, police and CRPF helped in rescue work. Officials visited the area and gave 60,000 as initial aid to each affected family. The government is asked to give rupees 10 lakh to each family on the date. Rescue and relief work is still going on. आज की रात जो 11 बजे 11:30 बजे कल रात का वाक़ा है कि यहाँ ज़ोरदार बारिश हुई, आंधी चली, उसके बाद एक आवाज़ सी काफ़ी खौफनाक आवाज़ हुई, जिसमें कि इलाका जो है हमारा, जहाँ हमारा एक प्राइमरी स्कूल नतना था जो उम्मेद पंचायत में पड़ता है, वहाँ एक कहने के जो हमारे लोग हैं, ऐसा खौफनाक आवाज़ आई जहाँ वो जैसे पानी का एक गोला गिरा, उसने अपने उस स्कूल को भी और उस ज़मीन को भी और पूरी पहाड़ी को बह के नीचे लाया और 500 मीटर पर नीचे हमारे जो मकान थे जिसमें ये हमारे 5 लोग चले गए, ये उन मकानों में थे और मकानों को समेत वो मलबे में नीचे नाले में उनको पहुंचा लिया। 4 की डेड बॉडियाँ मिल गई जिनकी अभी संस्कार करके हम आ रहे हैं, तो एक अभी डेड बॉडी नहीं मिली है। ये 4 लोगों को कम से कम भी पर हेड 10-10 लाख रुपया दिया जाए, जिससे उनका कोई पीछे जो है उनका अयाल जो बचा हुआ है उनको कम से कम उसका सहारा मिले। अप्रॉक्सीमेटली इस इंसिडेंट में थोड़ा कम हुआ, सिर्फ घरों को एक कैटल शेड जिसमें 3 कैटल्स का लॉस भी हुआ है, 2 काउज है, 1 काफ है, छोटी गाय है, तो बाकी यही जो 5 बंदे हैं मिसिंग थे, जिसमें 4 की डेड बॉडियाँ रिट्रीव हो गई हैं। तो अभी सर रेस्क्यू वगैरह चला है, SDRF वगैरह टीम लगी हुई अभी रेस्क्यू पर। मॉर्निंग में जो ही खबर मिली, मैं अपनी टीम लेके 84 बटालियन की CRPF की टीम लेके यहाँ पे करीब हमारा कैंप यहाँ से 18 किलोमीटर है, वहाँ से अपनी गाड़ियों में तुरंत जो लेके निकला और मैं तकरीबन यहाँ पे 2 घंटे लग गए मेरे को आने। The Jammu-Srinagar National Highway remained closed for fresh traffic for the 6th consecutive day on Sunday as heavy rain and fresh landslide hampered restoration effort. No vehicles were allowed from either side, keeping the only all-weather link to Kashmir shut. Widespread rainfall caused across the Jammu region, including Udhampur, also disrupted daily life in Jammu city. The circular road connecting Gujarnagar and Sidra via Pachtriti, known as Thandi Sakar, also closed due to falling rock and landslide. Officials have advised commuters to use alternate route. A 38-year-old CRPF Inspector Nirmal Upadhyay was found dead under mysterious circumstances inside his car at Kanpur Central Railway Station on Friday evening. Upadhyay, originally from Pithogarh in Uttarakhand, served as an inspector in the signal department with the CRPF 183 Battalion in Pulwama, Jammu and Kashmir. He has been on medical leave for the past 12 days. GRP officials and forensic experts collected evidence from the scene and sent the body for a postmortem. A liquor bottle was reportedly recovered from the vehicle. A railway official confirmed that a panel of doctors will conduct the autopsy and further actions will depend on the report's finding. अभी तो कुछ एग्जैक्टली पता नहीं है, अब देखिए क्या बताते हैं।
फोन किसी का आया था आपके पास, कैसे पता चला, जानकारी कैसे? थाने से जीआरपी के उससे आया था, विभाग से। कुछ आप परेशान रहते हैं? नहीं नहीं, विवाद भी हुआ था आपको? कुछ नहीं, कोई विवाद नहीं, ड्यूटी पे जाना था उन्हें। हाँ, अल्कोहल का ज़्यादा था, अल्कोहल का ज़्यादा था कल। कैसे, क्या घटना हुई, क्या सूचना मिली आपको? अभी तो कुछ एग्जैक्टली पता नहीं है, अब देखिए क्या बताते हैं। फोन किसी का आया था आपके पास, कैसे पता चला? On Sunday, 6 family members died in a landslide near the Mata Vishnu Devi temple. A group of 16 relatives was on a religious trip when the accident happened. 2 children survived and are hospitalized. One is in serious condition. Only 2 elderly parents and 2 young children were left. The elderly mother was carried safely in palki. The family said they did not get enough help from the authorities after the disaster and had to pay for cremations themselves. In total, 34 pilgrims died and 20 were injured in the landslide. मेरे बेटा पालकी पर बैठा दिया। अब मैंने कहा एक बच्चा के दे दो, मेरे ये बच्ची को मैंने ले लिया। मेरे छोटा लड़का के बच्चा है, एगो आईसीयू में है 2 साल के, और मेरे 2 बेटा चला गया, मेरे पोती, मेरे बहू, 4 गो चला गया। मैं क्या करूं, मैं तो बहुत मेरे बुढ़ापा के सहारा छीन गया, दोनों बेटा मेरा चला गया, मैं क्या करूं। कितने लोग गए थे आप? हम 16 जने गए थे। Delhi Police Crime Branch busted a racket making and selling fake products like All Out Ultra, Goodnight, Goodrich Hit and Goodrich Soap. Acting on a tip-off, police raided a warehouse in Rohini on August 27, where they found many counterfeit items. The goods were confirmed as fake by an expert from the companies. The warehouse owner Ankit Mittal was arrested, and further raid led to the arrest of 2 more people, Happy Goyal and Naresh Singh, involved in the crime. Police seized a large amount of fake products, machines and materials used to make them. A case has been registered under the Bharatiya Nyaya Sanhita and Copyright Act. The investigation is ongoing to find more people involved. A man was arrested in Delhi's Rohini for allegedly murdering his wife and mother-in-law following a dispute over birthday gift during his son's celebration. The incident came to light after Meg Sinha alerted police when his call to his mother and sister went unanswered. The bodies were found in Priya's section 17 flat, locked from the outside with visible bloodstain. Police say the dispute between Priya and her husband, who is currently unemployed, escalated during the birthday celebration of their son Chirag on August 28. Yogesh allegedly killed both women and fled with the children. Police recovered the blood-stained cloth and a pair of scissors from the crime scene, and now investigation by the crime team and forensic science laboratory is ongoing. हमारी मम्मी अपनी बहन के रहने के लिए आई हुई थी और हम लोग उनको फ़ोन कर रहे थे तो वो फ़ोन उठा नहीं रही थी, तो हमें टेंशन हुई कि हमारी मम्मी फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। उससे एक रात पहले हमारी मम्मी ने बोलता कि आप सुबह हमारे घर आ जाएंगे। मम्मी अपनी बहन, मतलब हमारी बहन क्या कर रही थी, उन्होंने बोलता सुबह आ जाऊँगी। जब हम सुबह कॉल कर रहे थे तो वो आई नहीं। मैं मम्मी ने बताया था इनका थोड़ा झगड़ा चल रहा है, मैं अभी का मैं सुलझा के सुबह आती हूँ। मैं ठीक है मम्मी, उन्होंने बोला सुबह आ जाऊँगी। सुबह 11 बज गए, हमको दिक्कत 11:30 बज गए। फिर हमने 12 बजे कॉल करना स्टार्ट किया, 12 से लेकर 2 तक कॉल भी किया तो उठाया नहीं। तो हमें लगा कि सो रहे होंगे, शायद तभी नहीं उठा रहे हैं ना। Delhi Police Special Cell has arrested 4 members of the Kapil Sangwan alias Nandu Venkat Rang gang, included 2 sharpshooters in 2 separate encounters in Rohini and Jafarpur Kalan. In the latest operation, Navin alias of Rohtak and Anmol Kohli of Ambala were caught after a brief exchange of fire in Jafarpur Kalan. Both were wanted in a firing case at a businessman's house in Chawal for extortion and sustaining gunshot injuries before being hospitalized. According to police, the gang lured young recruits via social media and monetary promises, engaging them in criminal activities including shooting for extortion. In 2 major crackdowns, Delhi police seized over 1 kg of heroin and busted an interstate mobile smuggling racket. In the first case, a woman Afsana was arrested from Balsma Dairy with 300 grams of heroin.
Her interrogation led to the arrest of 2 suppliers from whom another 712 grams was recovered. A total of 1.12 kg of heroin was seized under the NDPS Act Section 21, 25 and 29. In a separate operation, police arrested 8 members of a mobile snatching gang and recovered over 300 stolen phones. Police said more arrests are likely as investigation continues. Delhi's Major Dhyan Chand National Stadium buzzed with energy on Sunday morning as hundreds of fitness enthusiasts took part in the Fit India Sunday on Cycle initiative, part of the Ministry of Youth Affairs and Sport National Sports Day celebration. Union Minister Mansukh Mandavia joined the event alongside National Sports Federation, promoting fitness and a healthy lifestyle at the grassroots level across the country. Each pedal promotes the message of Fit India. Former Commonwealth Game medalist Trupti praised the initiative, saying the environment today was really amazing and that he was surprised to see so many people cycling at 5 in the morning. This is a fantastic initiative, he added. राष्ट्रीय खेल दिन के उपलक्ष्य में 3 दिन तक राष्ट्रीय खेल उत्सव मनाया गया। पहले दिन देश के लाखों लोग 1 घंटे के लिए खेल के मैदान में आए और देश को खेलने का संदेश दिया। दूसरे दिन देश में 200 से अधिक स्थानों पर स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल सरकार के द्वारा स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन करा गया, जिसमें भारत खेलो नीति और स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल पर विस्तृत चर्चा करी गई। और आज तीसरे दिन देश में 10,000 से अधिक स्थानों पर संडे ऑन साइकिल का कार्यक्रम करा गया। संडे ऑन साइकिल यानी कि साइकिलिंग ये हमें धरती से जोड़ती है। जो आज का माहौल था बहुत ही अमेजिंग था, मैं कह सकती हूँ। जो वाइब्रेंसी आज देखी, जो एंथुजियाज्म हमने देखा, इतने सारे लोग संडेज को 5:30 बजे सुबह उठ के बच्चों से लेके अडल्ट्स तक सारे एज ग्रुप्स में आए थे। मैं तो देख के बहुत ही हैरान रह चुकी। मैंने सुना तो काफी था, लेकिन जो आज पहली बार फिजिकली जो देखा, अमेजिंग। एंड आई थिंक दिस इज अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव। I would like to thank our Honorable Prime Minister for launching Fit India and ensuring कि खाली स्पोर्ट्स पर्सन्स ही नहीं, लेकिन हर एक आदमी को हेल्थ में आना चाहिए, अपने हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए। स्पेशली जो अभी माहौल चल रहा है, जो एनवायरनमेंट वगैरह चल रहा है कि जहाँ पे लाइफ काफ़ी सेडेंट्री हो रही है, हम लोग ज़्यादा एक्सरसाइज या फिटनेस में ध्यान नहीं दे रहे थे। और जिस तरीके से हमको करना चाहिए, स्पेशली कोविड के बाद में काफ़ी सारी जागरूकता शुरू हो गई है कि कितना हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, कितना कोई भी स्पोर्ट्स हो, आप आधा घंटा अगर खेलते हो तो। Continuous rain, flood and landslide have severely disrupted travel across Uttarakhand, blocking major roads including the Badrinath National Highway and the Jyotirmad Malari Road. A bridge collapse on the Tamak Nala and landslide in Chamoli and Tarali areas have further worsened road access. The Indian Meteorological Department has issued a red alert for heavy rainfall following a cloudburst in Rudraprayag and Chamoli. Chief Minister Pushkar Singh Dhami directed immediate relief and rescue operation, assuring state support for affected communities. Satellite data from INSAT 3DR indicates intense convection across several states, with the IMD forecasting more heavy rain until September 2 and warning of possible flash flood in Uttarakhand and Himachal Pradesh. An Air India flight from Delhi to Indore was forced to return shortly after takeoff on Saturday due to a fire indicating in its right engine. The cockpit crew followed standard protocol by shutting down the engine and safely landing back in Delhi. The airline confirmed the aircraft had been grounded for inspection and passengers are being accommodated in an alternate flight. Air India expressed regret over the inconvenience, stating passengers' safety as its top priority. The DGCA has been informed and is expected to investigate the incident.
On Sunday, Chinese President Xi Jinping told Indian Prime Minister Narendra Modi that India and China should think about their relationship in a long-term and strategic way. The two leaders met during the Shanghai Cooperation Organization summit. Xi said both countries should support working with many nations and aim for a world where power is shared by many countries. He said India and China should help make international relations fairer and contribute to peace and prosperity in Asia and the world. This was their first meeting in about 10 months and is important because India's relations with the US have recently become tense due to trade issues. We'll take another short break here. Stay tuned, we'll be right back. Welcome back once again. Let's get back with the news. Russia launched a massive aerial assault on southern Ukraine, killing 1 person and injured 28 in Ukraine's Air Force reported shooting down most of the 537 drones and 45 missiles fired overnight. The attack came after a deadly strike on Kyiv earlier this week that killed 23 despite Moscow's claim to support peace talks. Meanwhile, the US approved an $825 million arms package on Kyiv, and EU leaders debated using frozen Russia assets to aid Ukraine. In retaliation, Ukraine targeted 2 Russian oil, worsening fuel shortage that led Moscow to suspend gasoline exports. An Israeli airstrike killed Ahmed al-Rahawi, Prime Minister of the Houthi-run government in Yemen's capital Sana'a. Al-Rahawi is the highest-ranking Houthi official to be killed in the ongoing Israel-US campaign. The strike targeted a villa in Beit Baus, southern Sana'a, on Thursday, killing al-Rahawi along with several ministers. Israeli confirmed the operation, saying it targeted senior officials responsible for terror actions against Israel. The US and Israel launched this strike following Houthis' attack on Israel and Red Sea shipping route, which disrupted nearly $1 trillion in trade. Analysts described the killing as a serious setback for the Houthis and a shift towards targeting rebel leadership. Chinese President Xi Jinping met Prime Minister Narendra Modi on the sideline of the SCO summit on Sunday, stating that it is the right choice for India and China to be friends and work as partners. Xi emphasized the need for both nations to take a strategic and long-term view of bilateral ties, adding that India and China should dance together like the elephant and the dragon to enable each other's success. He called for multilateralism and multipolar world and greater democracy in international relations, indirectly criticizing unilateral actions like those seen under the former US President Donald Trump. Nepalese Prime Minister KP Sharma Oli on Saturday formally objected to the India-China agreement to use Lepu Lake as a trade route during a bilateral meeting with Chinese President Xi Jinping in Tianjin. Nepal claims Lepu Lake is its territory and claims India rejects as neither justified nor based on historical fact. According to PM Secretariat, Nepal's Foreign Secretary stated that Prime Minister Oli expects China's cooperation in this matter. The two leaders said also agreed to strengthen bilateral ties and enhance cooperation between Nepal and China. That is all for the Nltv English Prime Time. For more news and updates, keep watching Nltv.